Hello friends. Now one point under the Laplace transform that we are discussing here. The point is Heaviside unit step function. अब हमें ये जो फंक्शन है अंडर द Laplace transform हमें डिस्कस करना है. This is one type of special function under the Laplace transform. Like Heaviside unit step function, Dirac delta function, periodic function. These are error functions, Bessel's function. These are nothing but some special function under the Laplace transform. अब ये एक one of the special function है under the Laplace, that is Heaviside unit step function that we are discussing. Now this function is defined as u of t equal to 0, 1. So this function is defined in two parts. The function is 0 when t is less than 0. t less than 0 है तो ये function 0 है u of t, and t greater than 0 अगर है तो function है 1. So यहाँ से आगे ये लाइन रिप्रेजेंट करता है the equation u of t equal to 1 when t is greater than 0. So this is a unit step function. अब हमें displaced unit step function define करना है. The displaced unit step function u of t minus a represents the function u of t which is displaced by a distance a. यानी ये जो u of t function था ये हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय अ डिस्टेंस a. तो यहां से यहां तक हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है. सो द डिस्टेंस इज a which is displaced by a distance a to the right of this. यहां से राइट में हमने उसको शिफ्ट कर दिया है and that distance we are assuming it is a. Then in that case this unit step function become u of t minus a, t less than a, यानी यहाँ से less than के लिए सभी function का value 0 है, and t greater than a, so in that case the function value is 1. So this is nothing but a displaced unit step function. So with the help of this definition of unit step function we are discussing the Laplace transform of Heaviside unit step function. तो हमें अब इसका लैप्लास डिस्कस करना है. So the representation of Heaviside can be represented by u of t, or in some books it is represented by h of t equals to 0, 1 for t less than 0, t greater than 0. The different notations they have used in the reference book. I am using here the Higher Engineering Mathematics Tata McGraw-Hill revision book. In that he presented the notation for Heaviside, that is u of t, and in H.K. Das they use the notation capital H of t for Heaviside. So onwards this notation I am using u of t. जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखे हैं अंडर द लैप्लास, वैसे ही some properties under the Heaviside unit step function is there. So I am writing here the properties of this Laplace of u of t. अब हमारा u यानी Heaviside function है. So in that case the Laplace is 1 upon s, that is Laplace of u of t. Next, Laplace of u of t minus a, यानी हमने यूनिट स्टेप फंक्शन अगर लिया तो उसका लैप्लास है 1 upon s. हाउ इट कम्स, तो उसका प्रूफ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, हमने ये डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पे लिख दिया है. यू कैन सी द रेफरेंस बुक, इन दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस दे हैव गिवन हाउ इट कम्स 1 upon s. नाउ लैप्लास ऑफ u of t माइनस है, दैट इज डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, तो उसका लैप्लास है 1 upon s e raised to minus as. Next, u of t minus a,
we are considering here function also, f of t minus a, u of t minus a, which is equals to e raised to minus as capital F of s. In this we have one condition: if a equals to 0, then f of t u of t, which is equals to capital F of s. अगर हमने a equal to 0 assume कर लिया in this property, so that property become Laplace of f of t u of t f of s only, e raised to 0 value it is 1. So this is the extension of this property. And one more, f of t minus a, f of t u of t minus a, then property output is see here what these four properties are under the Heaviside unit step function. पहला था यूनिट स्टेप फंक्शन, उसका हमने लैप्लास स्टैंडर्ड लिख दिया 1/s. ये जो दूसरा फंक्शन है दैट इज डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, उसका लैप्लास हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब तीसरा फंक्शन है डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड जो हमारा फंक्शन है उसमें भी एक डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है, डिस्टेंस दिया है. If they have the common difference, it should not be a different difference. यहाँ पर a value है, यहाँ पर b है, then it is not operated with this property. The property output comes when we have the same difference. अगर हमारे पास सेम डिफरेंस है तभी वो प्रॉपर्टी हमें इम्प्लीमेंट करनी है. अगर ये डिफरेंस 0 है, सो इन दैट केस Laplace of f of t u of t, that is unit step function here, then output is f of s. अब ये प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो, so you just assume that यहाँ पर u of t नहीं है, तो Laplace f of t हमेशा f of s रहता है. So अगर u of t है या नहीं है, still Laplace f of t का आउटपुट यही रहेगा. One more property, displace unit step function and a simple function given to us without the difference, then in that case this become the property output e raised to minus as Laplace f of t. a जो difference है वो आपको यहाँ पे add करना है. So this difference we have to add. ये simplify करो, उसका Laplace लो, and then we'll get the output. So this become 4 different properties of unit step function. Thank you.